हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 21 फरवरी 2023, दिन है ट्यूसडे, और आज हम करने जा रहे थे इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। इस वीडियो के थ्रू कंप्लीटली द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस होगी। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट पेज पे विहानी किलिंग्स बुक्ड फॉर मर्डर बाय राजस्थान पुलिस, 3 अक्यूज्ड वर्क एज हरियाणा पुलिस इन्फॉर्मर। जो मर्डर हुई थी राजस्थान पुलिस के बुक किया गया है, वो अक्यूज हरियाणा पुलिस के इन्फॉर्मर के तरह वर्क करते थे, तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। पास्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सम ओकेजन ए कंपनी आज विटनेस पुलिस। At least 3 of the accused named in FIR on alleged murder last week of Rajasthan resident Junaid and Nisar have close tie with police in Haryana, Nuhu district as informer of suspect cattle smuggler, even accompanying police team on raid. Next articles पे higher safety net EPFO allow employees to new option for higher pension. EPS सब्सक्राइबर कैन चूज हायर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द पेंशन। जो सब्सक्राइबर है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के हु डिड नॉट ऑप्शन फॉर हायर पेंशन अंडर द अर्लियर विंडो हैव नाउ प्रोवाइड अनदर ऑप्शन नाउ। द कंपनीज विथ सुप्रीम कोर्ट नवंबर 4, 2022 ऑर्डर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO मंडे में इशू किया इन्फॉर्मेशन टू ऑल द रीजनल एंड जोनल ऑफिस ऑन द मैनर इन व्हिच एम्प्लॉयज शुड अप्लाई फॉर हायर पेंशन। इन अ नटसेल, द EPFO have now allow subscriber to go beyond the pensionable salary capable to 15,000 a month, on which employee deduct a sum equal to 8.33% of the actual basic salary toward the pension under the employee pension scheme. Detail regarding the method of deposit and computation of pension will be detailed by subsequent circular, EPFO said. नेक्स्ट आर्टिकल्स पे एक्स अंडमान चीफ सेक्रेटरी गेट बेल इन रेप केस। जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जितेंद्र नारायण को ग्रांटेड की गई है बेल बाय द पोर्ट बिहार सर्किट ब्रांच ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन मंडे इन रेप केस फाइल्ड बाय द 21 ईयर ओल्ड वुमेन। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे उद्धव ठाकरे ने मूव किया सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन बेस्ड हैव मेजोरिटी इन राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल। चैलेंजिंग द इलेक्शन कमीशन की जो डिसीजन रिकॉग्नाइज किए गए ये एकनाथ शिंदे को लीड फैक्शन एस ए रियल शिवसेना एंड अलॉट द पार्टी नेम एंड बो एंड एरो सिंबल टू इट। फॉर्मर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मूव किया सुप्रीम कोर्ट को मंडे में। इन हिच पिटिशन ठाकरे कनेक्टेड that election commission do not have the rely on legislative majority test as disqualification proceeding against the Shinde supporter are still pending. If the disqualified Shinde fiction will not have legislative majority, he said. नेक्स्ट आर्टिकल्स पे एक फ़ोटो दी गई है बाइडेन एंड जेलेंस्की इन कीव। यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को मीटिंग कर रहे हैं। अनअनाउंस विजिट टू कीव ऑन मंडे। 1 year लेटर कीव स्टैंड अमेरिका स्टैंड विथ यू एंड वर्ल्ड स्टैंड विथ यू, बाइडेन ने कहा है। और ईडी ने रेड किया है छत्तीसगढ़ कांग्रेस एमएलए इन कोल केस पार्टी से वेदांता। जो इंस्पॉर्टमेंट डायरेक्टर है मंडे में कंडक्ट किए रेड एट द 30 प्राइवेट प्रोमिसेस ऑफ 8 पीपुल इन छत्तीसगढ़ इंक्लूडिंग द रेसिडेंट ऑफ एटलीस्ट 2 कांग्रेस एमएलए and other associated with party as part of the investigation in coal levy case. Official किया गया recruiting to the raid which are still in progress Monday. Congress slam की गई center for targeting the leaders at the time when party is preparing to hold AICC preliminary pension in Raipur. About the 100 Congress worker also staged to protest outside the ED office in Raipur. नेक्स्ट आर्टिकल्स पर चर्च वांट्स अगेंस्ट द कम्युनल फोर्स, बीजेपी से नॉट एंटी क्रिश्चियन। जो संडे मॉर्निंग में हार्ट ऑफ कोहिमा लीडिंग टू द कॉन्ग्रेचुलेटेड इन द साइंस सिटी चर्च रिवेंडो केडो प्रेजिडी read out to the 2 special prayer point voting the state assembly election on February 27 and prosecute the church and Christian in India. Perry say that our member all over the state exercise judicially the sacred duty to vote in coming election for good of the state by choosing leader who
would listen to people and the response effectively in their anxiety and need he read. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. Sindhe fiction take over the Sena office in legislative building. 3 days after the election commission recognized the fiction lead by Chief Minister Eknath Sindhe, real Shiv Sena fiction on Monday took control of party office in Maharashtra legislative building, which was still now under control of Shiv Sena President Uddhav Thackeray. और धनकर ने प्रेस ब्रेच किया है, सिख ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रोब अगेंस्ट द 12 opposition MPs. Setting the stage for the more uproarious scenes in Rajya Sabha, चेयरमैन जगदीप धनकर ने आस्क किया पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए 12 MPs from Congress and Aam Aadmi Party for breach of privilege for the presently and the willful obstacle proceeding of House during the recent budget session, promoting the multi-adjournment. According to Rajya Sabha Bulletin, chairman have the referred the question of alleged breach of privilege arising out to the gross disorderly conduct displayed by the member to the Committee of Privilege for Expectation Investigation and Report. 9 of MPs from Congress will 3 of from Election Commission can decide Dictated should be disallowed. Uddhav. Day after the election commission recognized the fiction led by the Maharashtra Chief Minister Eknath Sindhe, real Shiv Sena, allowed the party name bow and arrow system. Shiv Sena President Uddhav Thackeray ने मंडे में कहा कि demanding the dissolution of poll panel. He also demanded that the election commission should not be appointed directly by the government but instead be elected. Next articles पे new job to ensure youth return to your villages. PM calling the present era Amritkal golden age of wonderful possibility for the youth. Prime Minister नरेंद्र मोदी ने मंडे में अर्ज किया कि them to speed up the country development through their service. Addressing the Uttarakhand Rozgar Mela via video conferencing on Monday, Modi said the day marks a new beginning for those who their appointment letter and said that it is not just a life-changing opportunity but medium for the holistic change. Next articles पे Supreme Court not everything said amount to hate speech. This insignificant comment में Supreme Court ने मंडे में कहा कि while the intercepting the section 153A of Indian Penal Code, it will have to be borne in mind that not everything that is said will amount to hate speech. The bench Justice M.K. Joseph and B. Nagaratha said while hearing a appeal which raised the question of alleged informational speech made by the rally or the organized by the Ekla Hindu Samaj in Maharashtra on January 29. We will like to bring something to your notice. 2 days back, we started a proceeding against the Arvind Kejriwal involved the Section 125 of Representation of People Act, same 135A. So he brought a list of decision of the court as what is 153A public order should be effected and it not everything which is said to amount to hate speech. तो स्क्रिप्टेड आर्टिकल दिए गए. नेक्स्ट आर्टिकल में शाह ने प्रॉमिस किया एनडीए गवर्नमेंट विल फुलफिल द ईस्ट नागालैंड ग्रुप डिमांड आफ्टर द इलेक्शन जो सेपरेट स्टेट अमंग द ENPO डिमांड. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. सुप्रीम कोर्ट जंक PLI सीकिंग यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज. सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में कहा कि दैट इज नॉट वर्किंग प्लीज एनी सेक्शन ऑफ द पॉलिटिक बट इंस्टीट्यूट विच ड्यूटी विच विल बी डू अंडररेटेड बाय द विल पीपुल फील about us. The top court reminding that it is not the exclusive custodian of constitution, that the parliamentary is equal to custodian of the constitution. The Chief Justice of India D.Y. Chandrachud ने presiding कर रहे थे over the 3 judge bench made by the comments as the bench was hearing PLI by advocate Ashwin Uddhav seeking to uniform age of marriage from men and women. Next articles पे be the best relief team. PM louds NDRF work in quick hit in Turkey.
जो लाउडिंग कर रहे थे वर्क ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की पर्सनल इन्वॉल्व इन ऑपरेशन दोस्त इन अर्थक्वेक हिट तुर्की सीरिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे में कहा कि आस्क्ड देम टू स्ट्रेंथ देयर आइडेंटिटी एज द बेस्ट रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम इन द वर्ल्ड। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। जो एडिटोरियल की है फान इन द वैली, जो रिड्यूसिंग करेगी आर्मी की प्रेजेंस जम्मू कश्मीर इंटरलैंड इज ए लॉजिकल स्टेप बट द फ्रेट सिक्योरिटी सिचुएशन मस्ट बी फैक्टर इन। जो वेलकम किया गया डिसीजन हैज बिगन टू प्लगिंग द प्रेजेंस ऑफ आर्मी ट्रूप इन सिविलियन एरिया इन द हिंटरलैंड ऑफ जम्मू कश्मीर और एक्सक्लूडिंग करेगी पार्लियामेंट्री ए नंबर ऑफ आर्मी सोल्जर इन जम्मू कश्मीर सेट टू बी रीजन 1.7 lakh, that this number is including the soldier posted along the 740 kilometer line of control with Pakistan. Army went Jammu Kashmir in 1990s at the time when the valley was engulfed by the militancy and terrorism. The police force of the Earthsfield state was not adequate equipped to handle that was violent associate situation and cross-border ramification. Strengthening the soldier identity to keep the check on civilian is not good for the army or for the people, with the Union Home Minister claiming the big reduction in the number of the terrorist incident and the all statistics point to drop in number of the terrorists as well the terrorist recruitment. Training of security force have the logically next step. If it has been posted that CRPF can fill in army. The proposal की गई intend to think out the presence of Rashtriya Rifle, the force rise in army special for the counter-insurgency during duties in Kashmir, said to be an advanced state consideration in year of G20 presidency. The move could be certainly help Delhi counter the international disruption of the Kashmir as the world most militarized region. नेक्स्ट आर्टिकल्स पे ए डबल एज ब्लॉग वन गवर्नमेंट हार्ड नॉच रिस्पॉन्स टू फॉरेन मीडिया क्रिटिसिज्म मे बी वर्किंग बट इट नॉट बी रिलेबल स्ट्रैटेजी। जो अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज फ्रॉम द हिज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इंटरैक्ट किया ग्रुप ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस पेट्रोनियर in February 15 while asking them to real protectors of democracy and nationalism. He described as the dumping of information as another way to invention. He called for the bold and effective step to neutralize it. Vice President further underlined the need of to remain alert to counter the doctorate narrative to run down the India growth story. जो वाइस प्रेसिडेंट ने फॉर्मुलेट करे थे इंडेक्ट दैट फॉर हिम डंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इम्प्लाइज द डॉक्टरेट नैरेटिव दैट जस्ट ए डंपिंग ऑफ गुड्स डैमेज ए कंट्री इंडस्ट्री ऑफ डंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू व्हिच द डॉक्टरेट नैरेटिव आर स्प्रेड इन डिजाइन टू द डैमेज द कंट्री इंक्लूडिंग द इकोनॉमी and seen dumping of information in the invention. It is not to be reversed and immediately counter remark came after survey began BBC office in Delhi and Mumbai certain in if the organization have infringed provision of Indian tax law. It will not be completely illegal to refer that perhaps he will directly referring and the provide नीड टू स्ट्रॉन्ग एक्शन काउंटर द BBC डॉक्टर नैरेटिव। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया जो गवर्नमेंट हार्ड नॉज है रिस्पॉन्स कर रही है फॉरेन मीडिया को क्रिटिसिज्म बाय वर्किंग बट इसके लिए रिलायबल स्ट्रैटेजी चाहिए। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया मोदी गवर्नमेंट हैज अपर एंटी विद BBC इन पर्टिकुलर फॉरेन मीडिया इन जनरली इन एंटी इंडिया स्पेशली एंटी मोदी रिपोर्टिंग टैक्स अथॉरिटी सर्वे एंड द ऑफिशियल स्टेटमेंट एट their conclusion demonstrate that it is interesting that not Western government, not even British, was critical of survey that will be forfeit. Modi government believes that so long as Indian market can confer advantage of Western commerce and industry, West liberal media criticism of politics and action need not to taken seriously. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे
गेट टू वर्क। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट दी गई है मेयर पोल में, दिल्ली के सुलभी वाल कॉल फॉर द सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट टू स्टॉप ब्रेकिंग that taken Supreme Court decision break impassive over the Delhi mayor polls. The result of election in Delhi Municipal Corporation were declared in December last year, but the preceding discord between the AAP and BJP lead to election for mayor office being called to 3 times. The latter being instead to Aldram should be allowed to be voted in polls. It drawn in the technical and nominated members say that after council meeting, a press claim Apex Court have shut down to the contention and violation and position of AF and which the 134 member in the 250 member council. More importantly, last week's verdict affirmed the cardinal democratic principle only the elected representative should be elect the mayor to secretary आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। ए प्राइवेसी डेफिशिएट What reviews data protection law budget could further the endanger right to privacy। जो 2023 की प्रॉमिस की गई है लैंडमार्क ईयर टू द टेक्नोलॉजी एंड डिस्टिंक्शन इन इंडिया, द यूनियन बजट इंडिकेट करेगी ग्रोइंग द पार्टनाइज दिस एरिया। डिजिटल ऑफ इंडिया प्रोग्राम विल अलॉट 4,795.24 crore allocation for Ministry of Electronics and IT have nearly doubled. There is a 1,000% increase in funding for the Artificial Intelligence and Digital Intelligence Unit, but something crucially is amiss. Digitization entitled ever to expand data collection, storage and sharing, including personal information such as biometric, financial and health data. Many of the initiatives announced by the union budget reinforce discord between the place of designation effort, the implementation of effective legal framework to the strength privacy and cyber security. A new national data governance policy is going to be introduced, enable the access by the anonymized data, including data does not contain personally identified officer like a name, age, phone number, address, etc., or the data from which PII has been removed. However, several studies have demonstrated the ease with this anonymized data can be reverse engineering to identify individuals. A study in 2019 was able to accurately identify 99.98% of Americans as anonymized data, including information held by the USA government on more than the 11 मिलियन पीपल। तो सिक्योरिटी आर्टिकल देखिए, इस साल जो यूनियन बजट में डिजिटाइजेशन की ज़्यादा भारी मार्क की गई है, उसके साथ में प्राइवेसी डेफिसिट भी देखी गई है क्योंकि ये इंडेंजर करेगा राइट टू प्राइवेसी। तो सिक्योरिटी आर्टिकल देखिए, द बजट ऑल्सो प्रोसेस द प्राइवेट इंसेंटिव चेंजेस टू इनकम टैक्स सर्च एंड सीजर प्रोविजन इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन। IT officials should seek the assistance of experts to access digital advice, encrypted data. Note that there are no effective legislative limitations and safeguards. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। दिस इज नॉट रोल्स देले, देयर इज पार्टनाइज कंसेंट इफ विलिंग द राइटर्स बुक नीड टू बी सेंसर्ड रीरिटन आफ्टर ऑल दिस ईयर। इट इज द क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ वेल मीनिंग adult that the mean makes them to believe the children need a inhabit a world even in the imagination and petty world and training wheels in the patronize the concept of childhood. The purpose of the storytelling is the self-defying moralized pleasures meant to be correct perfect little children citizen, not a fun transcripty way to children to find their own words and voice. For generation Rolla they love help children and sometimes even the belugged adults find humor, often dark and marchable, irrelevance. Now, nearly 33 years after his death, Dola publisher and its estate are going to be sanitize writers' work for to removal change language they deem to be offenses. नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो आइडियाज पेज है, द रियल टीपू सुल्तान। Karnataka BJP chief comment ignore the complexity of Tipu's record. Like the monarchy in general, he could be cruel in some settings and generous some elsewhere.
जो रेटिंग कर रहे थे September 1785 to his envoy in Pune, said the able Maratha state Sibul Sultan of Mysore was the man annoyed. There has been dispute between the local Muslim and Hindu. Tipu agents have publicly sealed with the former pressing Marathas authorized to resolve the matter. This was the Sultan warned and stupid. Instead of the posing of champion of Islam, he witnessed his men and take the pragmatic view for any fire or discord between the Maratha subject and Muslim Hindu both will be built to internal affirmities and weakening the enemy power in within. In fact, he added, if all this ambassador was to participate, they would should be conferred the financial plan instead of the traffic to advise the jail. Real Portlik, it is a than the tribute over the faith over the Sultan, at least in since instance. Nearly 250 years later, Tipu and his motivation continue to animated debate in India. There is course and tedious seasonal controversy on whether or not his birth anniversary should be declared as a public event. As the election approaches, Tipu is habitually rescored as a proxy for the Muslim. They are supposedly previous technologies as the clearance in speech by the Karnataka BJP chief Nali Kumar Khetla recently. 2023 Karnataka Assembly election is not just a regular democratic exercise, it is on the contrary civilizational war between the offensoring of Tipu and those who sing bhajans of Ram. The irony is the Sultan might be chuckled at this, our estimate politician too, after all the seeking political advantage to exporting communal privilege. तो उसके रिलेटेड आर्टिकल यही है जो टीपू सुल्तान को लेके कंट्रोवर्सी गई है बीजेपी के कर्नाटका चीफ के कमेंट के द्वारा, तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे आवर लैंग्वेज आवर स्लेव्स, पॉलिसी मेकर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रेगुलर इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंट बॉडी मस्ट इन्वेस्ट इन मदर टंग्स। इस आर्टिकल्स को एम के नायडू ने लिखा है, एम वेंकैया नायडू ने, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है। इन नवंबर 1999 यूनेस्को डिक्लेयर द February 21 से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन रिस्पॉन्स टू decline the state many languages all over. This is the year theme, militants education in necessity to transport education. Underscore the importance of using multiple language in framing in impact of system education. UNESCO state a monopolial language system to education which relies on the providing education in only one language that it not necessarily shared by all learner may be impact negatively learning performance और द डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल एंड फाउंडेशनल लिटरेसी स्किल, तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे, इन सिटी ऑफ पावर इनसाइडर आउटसाइडर, टोनी जोसन पास अवे मंडे एट 71। एंथोनियो जुसेडेन और द टोनी everyone address him who passed away Monday was something was learned in the field of the corporate communication. He is one kind of public relation world operate the many different level. He had the friend in all walks of life, not just in media and business. He invaluable contract in politics and bureaucracy, judiciary and police and high security and diplomatic world provide him to invaluable information and kept him to constantly pledge into the corridor of power. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट आर्टिकल्स जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक्सप्लेन पेज की। मिलियंस इन इंडिया, पाकिस्तान एट रिस्क फ्रॉम द ग्लेशियल लेक फ्लोड से स्टडी। एक रिसेंटली स्टडी की गई है जो मिलियंस ऑफ इंडिया में और पाकिस्तान में रिस्क हैं ग्लेशियल लेक फ्लोड के द्वारा, तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। Around the 15 million people across the world face the risk of sudden and deadly flooding from the glacial lake, according to new study. More than half of these people live in 4 countries, जो इंडिया, पाकिस्तान, पेरू और चाइना है। पब्लिश किए गए जर्नल नेचर में स्टडी हैव बीन कंडक्ट बाय द कैरोलिन थायलर, रिचर्ड कार एंड स्टंगन डनगिंग इन द नॉर्थ यूनिवर्सिटी UK, टॉम रॉबिन्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसब्रो न्यूजीलैंड एंड मैथ्यू वेस्टो एंड नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के
जो glacial lake result for the shrinking glacier. In case water is released from them, it can be causes float in the downstream area. This is now the glacial lake outburst, float or globe. Speaking to Indian Express, Tommy Robinson, a co-founder of Pepper, said, as the climate continues warm, the glacial threat will from the larger and more numerous lake. At the same time, lakes are likely to become more exposed. Gulf triggers, such as a larger landslide or the ice avalanche entering the lake, displacing water and causing the natural dam impervious लेक टू फेल। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे छत्तीसगढ़ कोल लेवी केस में व्हाट इज द ईडी केस इज प्रोमिस्ड लिंक टू द कांग्रेस लीडर छत्तीसगढ़ वर सर्च ऑन मंडे हाउ मच मनी involved against whom have to investigation procedure so far. जो हेड ऑफ द कांग्रेस पार्टी प्रिलिमिनरी इन रायपुर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने मंडे में कैरी आउट किया सर्च एट द मल्टीपल लोकेशन इन छत्तीसगढ़ लिंक टू द कांग्रेस लीडर ऑन सम ऑफिशियल। जो सर्च की गई है 13 private premises of 8 people including the resident of the at least 2 Congress MLA and conduct की गई है part of the investigation into alleged money laundering and illegal levy on transportation of coal in the state. A press conference की गई दिल्ली में and Congress said ED stood for the eliminating democracy and extracting democracy. In Raipur, Chief Minister Bhupendra Bagal said they have conducted 5,000 raid but only barely 35 raid could be fined something, say BJP believe in destroying the opponent by using such tactics. उनके ऊपर व्हाट द एलिगेशन इन द केस जो ईडी ने एलिज लगाया कि इलीगल लीवी ऑफ द 25 per tons of coal was being collected in the state from the coal consuming companies by certain middlemen in the conversation with the key politician and bureaucrat. The agency has alleged that over the past few years, more than the 540 crore collected in this manner and part of the money went to Congress politician. तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे न्यू रिसर्चर राइज की गई होप फॉर द मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। जो रिसर्चर फ्रॉम द वेल कॉन्डिस मेडिसिन न्यूयॉर्क के हैव कम अप विद द एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग candidate temporarily stops sperm in the testis and prevent the pregnancy in prenatal models. This means the new kind of contraceptive for men and certainly available through the physical barrier. Condoms and surgical option vasectomy could be deployed and similar to how pill is exit for women. जो डॉक्टर जॉन बक हैं और डॉक्टर लिनो लेविन who conduct the study on demand male contraceptive via the actual inhibition of solvable identity or causes said the discovery could be game changer for the contraceptive. तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर काउंसिल व्हाट सेंटर वांट। जो सेंटर ने सीकिंग किया है चेंजेस द गाइडलाइन ऑफ फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर लॉयर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन आफ्टरमैथ ऑफ द 2017 रूलिंग इंदिरा जयसिंह ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया through the application for the modification filed before the apex court in Amar Vivek Agrawal and others basis High Court of Punjab and Haryana and basis other in February 16. Center has sought to revisit the parameters of determining the designation of senior advocate set in the 74 paragraph of the 2017 ruling para 36 the in main judgment, which had knowledge that the guidelines are not exclusive and left them open for the considered by the court to at the such point to time that some become necessary. जो डेजिग्नेशन है सीनियर काउंसिल के उसमें सेंटर क्या चाहती है तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। रोलार्ड दल्हा री रिटिन टू रिमूव ऑफेंसिव बिट एडिट एंड आउटरीच। जो चेंजेस की गई है मेड टू वर्क ऑफ द रोला दल्हा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ चिल्ड्रन लिटरेसी ऑल टाइम के टू मेक देम द मोर अटेंडेंट एट द मॉडर्न सेंसिटिवली बार द स्प्रेड आउटरीच with many calling the changes needless and marking the censorship. On Sunday, author of Salam Rushdie tweeted against the absorbed censorship and the said Putin books and Dallas estimates should be assumed. Sajan Nossel, of CEO of Return Association of the Pan America, and expressed
alarm at the reported and hundred of the changes of vulnerable words by the Rola Dala is reported effort to scrub the book that which might be offend someone. No shall discount the selective editing to making work of the literature company for particular sensibly as per the dangerous of new weapon and reminded those who might be career specific edit that this is the power to rewrite may be used to be those who are the opposed. Dalla, a British novelist of Norwegian descent and died in 1990, his book have sold more than the quarter billion copies have been translated to dozen of language. तो उसके रिलेटेड आर्टिकल देगा कि उनके जो ऑफेंसिव वर्ड को एडिट किया जाएगा और उन्हें री रिटन किया जाएगा, रिमूवल करा जाएगा, तो उसके ऊपर ही आर्टिकल दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे ऑफर 500 मिलियन इन एड बट न्यू एडवांस वेपनरी। बाइडेन ने बूस्ट किया यूक्रेन विद द सरप्राइज ट्रिप, कीव स्टैंड पुतिन वाज रॉन। यार साइरन राइज एज द बाइडेन एंड जेलेंस्की वॉक स्ट्रीट ऑफ वारटाउन कीव। और चाइनीज की वांग यू टू विजिट मॉस्को एज यूएसए वन ऑन सेल ऑफ आराम। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि विजिट टू यूक्रेन ऑन मंडे टू मीट द प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, स्टाकिंग गेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी टू कम्स डे आफ्टर द 1 year एनिवर्सरी ऑफ रशिया इन्वेंशन टू कंट्री। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया। बाइडेन ने स्पेंड किया मोर देन 5 hours इन कीव एंड मीटिंग द जेलेंस्की इन मैनेसियर प्लेस एंड हॉनरिंग द कंट्रीज फैलन सोल्जर एंड द मीटिंग यूएसए एम्बेसी स्टाफ। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जापान ने सीख किया अर्जेंट यूएनएस सी मीटिंग एज द नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर द 2 more मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने फायर किया 2 short रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इनटू द सी ईस्ट टू कंट्री मंडे इन सेकेंड टेस्ट लंच इन 3 days, promoting the Japan to request emergency meeting of the UNS Security Council। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। लंचेस कंटिन्यू टी फॉर टैक्स changes the beginning Sunday and follow the year when which North Korea launched more than the 70 missile, the most ever. Pyongyang has the recently escalated nuclear threat and threatened of the under presidentially strong response to annual USA South Korea military deal, which we view to the precision for invention। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया। इन रशिया विजिट इज प्रूव यूएसए फाइटिंग प्रॉक्सी वार। मॉस्को ने कमेंटर किया है रशिया की स्टेज इन टेलीविजन में मंडे में साउथ टू द यूज प्रेसिडेंट बाइडेन की जो विजिट की गई है कीव को कॉन्सिडेंट टू द फाइट यूएसए इज फाइटिंग फॉर प्रॉक्सी वार इन वर्क यूक्रेन। अमेरिका इज अ मॉस्को रियल एडवाइजर। नेक्स्ट आर्टिकल पे इमरान गेट प्रोडक्टिव बिल इन इलेक्शन कमीशन प्रोटेस्ट केस। जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम थे इमरान खान ने मंडे में एफआईआर किया है बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट व्हिच ग्रांटेड हिम टू प्रोडक्टिव बेल इन द केस लिंक टू द वायलेंट प्रोटेस्ट आउटसाइड द इलेक्शन कमीशन एडमिट्स टू द हाई ड्रामा आउटसाइड द कोर्ट प्रोमिसेस व्हिच हंड्रेड ऑफ हिज प्रोटेस्टर्स कन्वेंट टू द सो सॉलिडारिटी टू हिम। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे तुर्की सीरिया रॉक्ड बाय द क्विक 6.3 मैग्नीट्यूड रिपोर्ट ऑफ द डैमेज। जब मैग्नीट्यूड थी 6.3 earthquake की struck southern Turkey and near to the Syrian border late Monday, a setting of the panic and further damaging building 2 weeks after the country's most worst earthquake in modern history left 10,000 dead। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो इकोनॉमिक की है। बैंक एनबीएफसी स्टॉप लेंडिंग टू एप्स अंडर द लोन डिफॉल्ट गारंटी मॉडल्स। एक्सपर्ट फील दैट द आरबीआई रिजर्वेशन ऑन द फ्लेज इज जस्टिफाइड। जो बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है हैव टू अलाउ परस्यू टू टाई ऑफ विद द फाइनेंस प्लेयर्स टू डिजिटल लेंडिंग एप्स अंडर द फास्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी एफएलडीजी स्ट्रक्चर फॉर द लेंडिंग टू इन एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल agreement from the Reserve Bank of India. Broadly, lenders have taken approach to the FLD cannot be done with non-regulatory entities, fintech players that do not come under the RBI submit under the FLDG, a credit risk sharing agreement, a third party guarantee to compensation of the certain percentage of default in loan portfolio of the regulatory entities. Bank and NBFC bank cannot lend to directly to lending apps which have to recently come under the scrutiny of RBI and government under the unfair lending practice। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया।
बायजू की वर्किंग कर रहे हैं हार्ड टू अचीव ग्रुप लेवल फॉर प्रॉफिटेबल इन द फ्यू मंथ से को फाउंडर जो एडिक्ट स्टार्टअप बिजू है विल बी अचीव करेगा ग्रुप लेवल प्रॉफिटेबल इन द कमिंग मंथ आज इवन प्रीम ग्रैपल विद द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ एक्वाजिशन ऑफ व्हिट हार्ट जूनियर एंड फ्रीम co-founder दिव्या गोकुलनाथ सेट कहा गया व्हाइट हेड जूनियर प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन एडिटिंग a tech firm posing record loss over the 4,500 crore in financial year 21. In interview with the Somanandra Barik, Gokulnath, a teacher turned into Nipper, and also spoke about the allegation of selling course and the unsuspected parents, which have been ignited to debate in the parliament with the lawmaker calling for the central level regulation for the sector and relevance the edit companies to post-pandemic world and if Baidu seek to hugely sensible chatbot और चैट जीटीपी एज द थ्रेड एडिट एक्सपर्ट तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। और नीति आयोग ने अपॉइंट किया है BVR सुब्रमण्यम एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट के जो थिंक टैंक है नीति आयोग ने अपॉइंट किया गया है फॉर द कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम को आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे सुब्रमण्यम रिप्लेस द Parmaswari Iyer, who will be next executive director at the World Bank for the 3 year. The appointment committee of cabinet have approved the Subramaniam appointment for 2 years after his death of assumption of charge of the post and personal ministry order to create article दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे Sweden thread deal as the official travel for the EFTA talks. Switzerland have offered the make to concession of seeking to pull talk to India European Free Trade Association EFTA trade deal to the last track on hoping to the seal it this year as the to continue celebrating 75 of their friendship to create article दिए गए। Remittance for the overseas study fell to 42% in first 9 month of financial year 23। जो फंड सेंड किए गए अबोर्ड को स्टूडेंट अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम की डिक्लाइन की गई ओवर द 42% 2.57 बिलियन ड्यूरिंग द 9th month ended December 2022 of the current fiscal year 2022-2023 against the $4.4 billion in the same period of 2021। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट आर्टिकल स्पोर्ट किए तो आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस पे इतनी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।